A very lovely morning, my lovely petines. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome in your favorite class, Social Studies class. And what are you doing nowadays? क्या चल रहा है आजकल? In the last class, we have done our map work. Map किया था ना? So you have to practice that map. Okay? And today we will start a new work, a new chapter. That is very interesting and I hope you all will enjoy. Okay, and our new chapter is means of transport. Our new chapter is means of transport, chapter 17. Open page number 98. Okay, बेटा means of transport देखिए, first of all I will tell you about transport कि what is meant by transport and transportation. Okay बेटा, transportation means movement of people and goods from one place to another place. Like we move from our house to school. हम अपने घर से स्कूल जाते हैं ना. This is also a transportation, and we carry our things and our belongings with us. That is also a transportation. So this is all transportation. And means of transport means what means we are using to transport the things from one place to another. Okay, that is means of transport. Okay, like we use bus to go to school, and we use cycle, scooter, car to go to the market and to our family relatives. Okay, so these all are the means of transport. And some vehicles. Now we will also read about the types of means of transport. There are three types of means of transport, beta. First is land transport, then air transport and water transport. One by one I will explain you. Okay, and beta, we cannot use the same means of transport for going everywhere. Means कि हम हमेशा ऑल टाइम हम सेम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं यूज कर सकते. मीन्स मैं स्कूटी हर जगह यूज नहीं कर सकती हूँ. लाइक मैं स्कूटी यूज करती हूँ स्कूल आने के लिए, बट व्हेन आई वांट टू गो टू अनदर सिटी, so at that time I cannot go. Means this is my personal view. Okay, so our opinion for a vehicle is depends on many the distance that we travel. Look here, there are 3 points on which it depends, that the distance we have to travel, that how much distance we have to travel. Like short distance है तो we can go on cycle, very short है तो short है scooter, bike. Okay, long distance है तो we can choose car, bus, train. और बहुत ज़्यादा far away है तो we can also use the air transport. Okay, एंड मनी, दैट मनी दैट वी वॉन्ट टू स्पेंड, दैट कि हम एक ट्रांसपोर्ट पे हम कितना मनी स्पेंड करना चाहते हैं. ठीक है, लाइक अगर हम ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन इज cheaper means of transport. Okay, and our personal vehicles we can also choose, but air transport like aeroplanes and helicopter, they are the fastest means of transport, but they are costly. Okay, उनमें ज़्यादा मनी स्पेंड होता है. नेक्स्ट है बेटा कि द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर अवेलेबल. मीन्स कि जब हमें कहीं जाना होता है तो किस टाइप का व्हीकल हमारे पास अवेलेबल है. ओके, सो our choice for a vehicle depends on many things. Okay, and first type is land transport. Land transport देखो, it land transport means the vehicles that move on a land. ठीक है, जो लैंड पे मूव करते हैं. लाइक यू नो इट वेरी वेल, स्कूटर, बाइक, ऑटो, साइकिल, रिक्शा, train. Okay, these all are the means of land transport. Okay, and commonly people use this type of transport. Okay, look here beta, I'm showing you the types, some examples of land transport. Like देखो, we use bicycles or rickshaws. ठीक है, टू कवर शॉर्ट डिस्टेंसेज ऑन लैंड. बहुत हम जाते हैं ना, कभी साइकिल पे चले जाते हैं, कभी रिक्शा भी यूज़ कर लेते हैं. एंड लुक हेयर, दिस इज
these are also the means of land transport like car, jeep, taxi, scooter, bus, auto, bike. ठीक है, तो these types of transport we can use to travel within the city. ओके, और टू नियर बाय द सिटी ऑल्सो, मतलब पास के ही सिटी में, ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो हम ये सब यूज़ कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है बेटा ट्रेन्स. देखिए, ट्रेन्स आर यूज टू कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. ठीक है, दिस इज ऑल्सो मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, ट्रेन. ठीक है, एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड अबाउट यू मेट्रो ट्रेन. मेट्रो ट्रेन के बारे में मैंने आपको बताया ना, मेट्रो इन कोलकाता, दिल्ली, पीपल ऑल्सो ट्रेवल बाय मेट्रो ट्रेन. ओके, दिस इज ऑल्सो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. एंड these type of trains means these type of metro trains are used for traveling long distances within the city. ठीक है, अब जैसे दिल्ली है तो दिल्ली बहुत बड़ा सिटी है तो उसके अंदर ही हम ट्रेवल करते हैं तो मेट्रो ट्रेन से. ओके, एंड tram also I have told you about trams. Trams are also means of land transport and that moves only in Kolkata. ठीक है, कोलकाता सिटी में ही वो, उसमें हम ट्रेवल कर सकते हैं. So these are the means of land transport. Our next means of transport is water transport. Okay, so students, here you can see the water transport. So students, water transports are used to move the people or goods through the boat, ship, through over a sea, ocean, lake, canal and river. Okay, so if we want to travel through the water, we will use the water transport. And students, water transport is one of the earliest means of transport. ओके, अर्लीस्ट मीन्स ये सबसे पहले एज अ ट्रांसपोर्ट हमारे कंट्री में स्टार्ट हुआ था. ओके, एंड बोट्स आर मेनली यूज्ड वेयर पीपल लिव इन द प्लेसेस वेयर देर आर मैनी लेक्स एंड रिवर्स. जहाँ पर बहुत ज़्यादा लेक्स और रिवर्स होती हैं वहाँ पर क्या यूज़ होते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट मीन्स बोट्स, शिप्स जो हैं यूज़ होती हैं. ओके, एंड स्टूडेंट्स, जो डल लेक है, डल लेक इज इन श्रीनगर. इट हैज़ मैनी हाउस बोट्स. यहाँ पर क्या है, बहुत सारी हाउस बोट्स हैं. ओके, एंड शिकारा. शिकारा क्या होता है, शिकारा इज अ टाइप ऑफ बोट. इट इज फाउंड इन डल लेक. ये कहाँ पर मिलती है, डल लेक में मिलती है. एंड इट इज अ फेमस वुडन बोट. ओके, दैट इज यूज्ड टू गो अक्रॉस द लेक. ओके बेटा, now there are several means of water transports. So to cover the short distance we use boats, steamers. boats आपको पता है ना क्या होती हैं, steamers. So students, steamers क्या होते हैं, these are the types of boats which are powered by steam. means जिनको हम as a power क्या यूज करते हैं, steam. means भाप जो होती है उससे हमारी बोट चलती है. ओके, so steamers are the boat which are powered by the steam. Now next is ferries. ferries क्या होती हैं बेटा, these are the water taxis or we can also say water bus. so bus क्या होती है, bus, these carries the passengers and the buses stop on different places ना. so जो ferries हैं, these also stop on different stops. ये different stops पे रुकती हुई चलती हैं. this is ferry. this is a ferry and this is a steamer. ये किससे चलती है, steam से चलती है. and जो ferries होती हैं, here you can see इसमें काफ़ी सारे passengers बैठे हैं and it stops on different stops. okay, so a ferry is a passenger boat. okay, सो जो हमारी बोट हैं, स्टीमर्स हैं एंड फेरीज हैं, दीज आर यूज्ड फॉर द शॉर्ट डिस्टेंसेस. ओके, एंड स्टूडेंट्स, जो शिप्स होती हैं ये हम कब यूज करते हैं, दीज आर यूज्ड for carrying the goods and people over a long distance. when we want to carry a large distance, a long distance, then we use the ships. okay, and ships are used over long distance through the seas and the oceans. okay,
Here in your book, this is a ship. ये किसकी photo है? Ship. Now students, submarines. You know what are submarines? Students, submarines. In your book, you can see here the photo of submarine. So students, submarines are used for the defense purpose. Our army use the submarines for defense purpose, okay, and these submarines move under the water, okay. In your book you can see the picture of an aeroplane, okay, this is an aeroplane. Now the next means of air transport is helicopter. So students, helicopter is used during the time of floods, earthquake or any natural calamities, okay, and if the people suffering from these calamities, they require food or any help, then to reach to those people, we require helicopter, okay. And as you know, air transport is a very expensive means of travel, okay. So students, today we have learned so many interesting things, okay, means of transport, land transport, water transport and air transport, okay. So today we have completed only 2 pages, and in the next class we will complete our chapter, and in the next class we will read about uses of animals for transport and safety rules on the road, okay. So read the pages 99 and 100 and 101, means of transport and types of transport, okay. This is your homework. Bye bye, take care.